देखिए, इंसानियत से भी अगर पुरानी कोई लैंग्वेज है, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ लव। और एक बहुत ही अनकन्वेंशनल लव स्टोरी से रूबरू हमें कराने के लिए आ रही है एक बहुत ही इमोशनल, एक ऐसी फिल्म जो हमारे दिल को डेफिनेटली छुएगी, सफेद, जिसका टीजर देखकर मैं अभी बहुत सारे रंगों से, बहुत सारे इमोशन से भरी हुई हूँ। लेकिन जो लीड स्टार कास्ट है, उनका क्या हाल हुआ, उनसे हम जानेंगे, क्योंकि आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में इस वक्त हमारे साथ है बरखा एंड द वेरी टैलेंटेड अभय, जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अरे, थैंक यू। थैंक यू आपका हमारे स्वागत के लिए। बट एज आई सेड यार, टीजर देख के बहुत सारे इमोशंस के रंगों से मैं भर गई हूँ अबाउट सफेद। एज एक्टर्स, कितनी इमोशनल रोलर कोस्टर राइड आप लोगों के लिए रही, मैं आपसे जानूंगी। अभय, स्टार्टिंग विद यू, फिनोमिनल जॉब यार। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और इमोशनल से ज्यादा मैं कहूँगा ये मेरी पर्सनल जर्नी बहुत रही है, बिकॉज वो कैरेक्टर कैरेक्टर से एक जो कहानी बोलने की कोशिश होती है, वो इस कहानी में ऐसा था कि ऊपर ऊपर फ्लोट करना जरूरी नहीं था, वी हैड टू गो डीपर देन दैट। वो अंदर घुस के जो एक 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 दूसरों के एक सॉरोज को अपना सॉरो बनाना और वो दूसरों की खुशी को अपना बनाना, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज रही जो मेरे लिए भी बहुत आई ओपनिंग रही। और आई एम ग्लैड दैट आई प्लेड चांदी, बिकॉज वो मेरे लिए एक अनदर एक पर्सपेक्टिव जोड़ता है मेरी लाइफ में, जो बहुत सारी चीजों के लिए मेरा नजरिया बदल देता है, एंड इट मेक्स मी अ बेटर पर्सन एवरी टाइम। राइट, सो अभय इज प्लेइंग चांदनी। बरखा, मतलब मैं कभी मुझे से कोई बोले बरखा इज प्लेइंग अ कैरेक्टर लाइक दैट, एंड अगर आपका काम हमने फॉलो किया है, सो एक बार ना लगेगा, व्हाट, से इट अगेन। तो आपको जब ये बताया गया कि आप एक ट्रांसजेंडर प्ले करेंगी, व्हाट वाज योर रिएक्शन? The exact same reaction. It's like, what? Say it again. It was अच्छा। exactly that. Yeah, absolutely. I think it's not about, yeah, like you said, I have done certain kind of work or whatever, but there is a certain person that I am, okay? हम्म। And I'm playing a character which is not me, and a character which is so far away from me that when it first came to me, and I'm like, how would I do this? Right? That was the first reaction in every aspect, from whether I will be able to look the part or I will be able to act the part out, whether I'll be able to just put the soul into that character that it actually requires. I think these were हम्म। all the insecurities that first cropped up in my mind. But I'm so proud of myself today. I'm so glad I did this. I really am. राइट, एंड मैं जैसे कह रही थी कि जब आप टीजर देखते हो, क्योंकि एज ऑडियंस हमारे इमोशंस भी जुड़ जाते हैं, हम जो भी देख रहे होते हैं उसके साथ, कैरेक्टर्स के साथ हम रिलेट करते हैं या फिर एम्पथाइज या सिंपथाइज करते हैं। आप लोग उस कैरेक्टर की स्किन में घुसे हो, आपने वो कैरेक्टर्स को जिया है, एक दूसरे के काम को देखा है। सो कितना टाइम लगता था यार टू गेट आउट ऑफ दैट स्किन? कितना टाइम लगा? टू गेट आउट ऑफ दैट स्पेस। He hasn't. द स्किन ऑफ योर कैरेक्टर। ओह मैम, एक्चुअली जो निकलने का काम है ना, वो एक्चुअली मेरे लिए सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट से रहा है, कि मैं अब साड़ी नहीं पहनता, बिंदी नहीं लगाता, लिपस्टिक नहीं लगाता, बट मेंटली आई एम देयर ओनली एंड आई वांट टू बी देयर। दिस इज माय पर्सनल चॉइस दैट आई वांट टू बी कनेक्टेड टू माय कैरेक्टर थ्रू आउट माय जर्नी, जो भी आगे रहेगी। और ये मैम एक एक्चुअली इट्स अ एडिशनल थिंग व्हिच कम्स विद माय वर्टिकल ऑफ एक्टिंग, that it makes me understand different perceptions and different people, which ultimately makes me a better human. And that is हम्म। what matters to me the most. Because if you're playing a character, then you're not just, for me I'm talking about, मैं कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो it's not just for the 30 days which I'm playing that character or for certain number of days. It's the life which I've lived, and I really want to make that life larger than life, so that it reaches out to the audience and they connect and not just sympathize, but also have some empathy towards whatever I've played. And हम्म। since this, I mean, faith is all about communicating love and treating all of us as equals. I think we should not really deny to the fact that if one person or any of the other, any person in the society feels reserved or caged, then the whole society is caged, because we are a part of each other, and we on a whole makes it, you know, living worth. So I think राइट, that's what राइट, I really believe, and I hope it conveys. राइट। बट जनरली हमने देखा है,
जब भी इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है तो अक्सर ऐसा होता है कि कैरिकेचरिश बड़ा जो कैरेक्टर है उसे बना दिया जाता है. बट व्हाट आई हैव सीन विद यू गाइज इज कि आपने कोशिश की है बहुत ही अच्छी तरीके से कि आप वो पार्ट लगे. सो बरखा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रोल प्रेप आपके कैरेक्टर में घुसने की आपके लिए कितनी रही और क्या रही? You rightly observed that we are not showing any caricaturish, image of transgenders, eunuchs, which has been shown in cinema so far. For me, I think the biggest research, or rather, I would say eye opener, was actually spending time with these people. They're also Mm-hmm. our co-stars in the film. You will see them in the film. So while working with them, you realize that they're normal people. They talk normally, they behave normally. Do they have an exaggerated side to them? Of course they do. But don't we all? We all have an exaggerated sense of emotion, or hostility or love or hatred. We all have that as normal human beings as well, right? But if you meet them and if you spend time with them, they're normal. They talk like normal people. And I'm so glad that Sandeep had the courage to show that side of these people, because it might not be the most entertaining, because people are entertained by seeing loud, villainous, and negative looking transgenders. But to Hmm. have the courage to show them as absolutely normal human beings, I think that's what Safed has done. I don't think anybody has done that in cinema before. So our real research, or our real, I think, reality check was actually being with them, spending time with them on the shoot, and realizing that they're just like us. And I think it's more. I think we both. I don't know to what do we owe this privilege to play and portray such communities, and be their voice, and a very truthful one in this film. Yeah. Because ma'am, I feel. I mean, I really. मतलब सलाम है उनकी विल के लिए, that people reject them and still they pour love. ऐसा तो सिर्फ मतलब हमारे आसपास के सिनेरियो में सिर्फ माँ ही ऐसा कर सकती है. एक माँ ही अपना एक बेटा या बेटी चाहे अपनी माँ को डांट ले, लेकिन माँ हमेशा प्यार ही करती है. और हम मतलब वो तो हमसे क्या ही सीखेंगे, हमें एज अ सोसाइटी वी शुड कम अप टू देयर लेवल, कि हाँ वो जैसे रिएक्ट बिहेव कर रहे हैं एटलीस्ट हम उससे कुछ सीख ले. जैसे हम ट्रांसजेंडर्स को बोलते हैं दैट दे आर वेरी exaggerated, or they're very nude with everything. I think we are the ones who should be nude with emotions to them. They don't have any filter, we have filters. So if someone in the society who needs to pull off their filters are us, not them. राइट राइट. अच्छा, और जैसे बरखा आपने कहा द बिगेस्ट प्रेप वाज द ऑब्जर्वेशन जो आपने उन लोगों के साथ रह के की. सो जाहिर सी बात है उन लोगों ने भी आपको और ऑब्जर्व किया होगा, आपके काम को ऑब्जर्व किया होगा, आप उनको जो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो ऑब्जर्व किया होगा. एनी फीडबैक, एनी कमेंट्स फ्रॉम देम? So I have to tell you the one thing that happened. I don't think even Abhay knows this, but which was like the biggest compliment for me. So I was like in my costume and get up, and I was like, in my character, and there was this one transgender who was with me basically 24/7, Salma, and she was with me because Sandeep said that I need you to just observe her and watch her, and just kind of grasp whatever you can. And then we had these, transgenders who came to shoot that day. And so Salma just introduced me to them and saying that this is Radha. So they're like looking at me, okay? And then they were like, is she really like us? So she said, yeah, but she's from Bombay. So they said, oh, but she looks a little more different than us. So she said, yeah, because she's from Bombay. So Bombay wale thode alag hote hain. So they're sitting and talking to me for a good 5 minutes. They actually believed I was one of them. And that I think was like biggest compliment for me ever, to say that, hey, you know what? We did it. Because here I'm sitting with these people who don't know me, and they're like, I'm sure they had their doubts. But I think mostly they were convinced that, okay, she's one of us. Till Salma said, okay, you know what? She's just playing a part. But they were so appreciative of the fact to tell me that, oh, you look just like us. You talk Right. just like us. So that was And like as a an huge actor, what a compliment that in itself must have yeah, been. yeah.
So राइट। अच्छा, yeah, जैसे that अभी was the आपने best कहा ना thing. कि सलमा ने बोला कि ये बॉम्बे से है, तो जाहिर सी बात है आप एक ऐसी जगह, एक ऐसे शहर में शूट कर रहे थे, ए विच इज द ओल्डेस्ट सिटी इन द, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। दूसरा, जब हम बनारस की बात करते हैं, तो जो दो कम्युनिटीज आपने दिखाई हैं, यूनिक्स की, ट्रांसजेंडर्स की, या फिर विडोज की, यहाँ इनको लेके ना एक डर सा है, हमने जितना देखा है, जितना सुना है, जितना हमको सोसाइटी में दिखाया गया है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस शूटिंग देयर? अभय, पहले आप Um, बताओ। Quite a good question actually. Thank you for asking that. और हम एक्चुअली जस्ट टॉकिंग, और बनारस शहर की एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी है। हाँ। और उस एनर्जी के साथ जब, मतलब मेरे ख्याल से जैसे जो हमने सफेद शूट किया वो बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छे इंटेंशंस, बहुत ही साफ और प्योर नीयत से शूट की है। तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रही थी हमारे इंटेंशंस के साथ, बिकॉज उसमें कोई भेदभाव की आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो, और आपको करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज सच इज आर आर्ट। जितना ऑनेस्ट और जितना सच्चा रहेगा उतना ही दिलों तक पहुंचेगा, और वही एम रहता भी है। तो मेरे ख्याल से अगर ये किसी भी और शहर में अगर कहीं भी हम इसको शूट करते ना, चाहे जितनी मर्जी सुंदर लोकेशन ऑल ओवर वर्ल्ड, बट आई थिंक जो जो बनारस की जो एनर्जी है और जो स्पिरिचुअलिटी है उस शहर की, अगर वो नहीं रहती तो सफेद कहीं ना कहीं वो सफेद रंग ही फीका पड़ जाता। तो हम्म। वो बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट था, और बनारस इटसेल्फ हैज कम आउट एज अ कैरेक्टर इन द फिल्म। yeah. राइट, वेरी वेल सेड। इनफैक्ट वर्षा, एडिंग टू दैट क्वेश्चन, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे एक्टर्स जब बनारस में शूट करते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि यार हम शूट करने जब गए थे हम एक डिफरेंट इंडिविजुअल थे, शूट करने के बाद जब हम आए तो हमारी भी एनर्जी शिफ्ट हो गई। आपको कुछ ऐसा फील हुआ? Yeah, I think with me that definitely happened. I was also shooting for this film at a time where there was a lot happening in my life. So I think at a point like that, to go to Banaras, and which is the first time, your first reaction is too many people, भीड़ है, chaos है, घंटियां बज रही हैं, आवाज आ रही है, mantra. It just feels like noise. But in a few minutes, once that sinks in, there is this inane amount of peace that you feel. I do not know how that happens. Like he said, there is some energy to that place that amidst all that chaos, where there is, there's a Shamshan Ghat at one side, there are हम्म। people praying and all of that. Amidst all that chaos, it's like between life and death, somewhere that place exists, क्या? and there is this peace all around you, even though it's chaotic and crowded and noisy, राइट, but there is this peace, and I definitely felt that. So राइट, yeah. राइट। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप दोनों ने ही बनारस के बारे में जितना हमने सुना है उसमें एड ऑन ही किया है। बट आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू कि एक फिल्म जब आप बनाते हैं, कोई भी कंटेंट बनाते हैं, तो उसके पीछे मेकर्स की और जो लोग उससे जुड़े होते हैं उनकी एक एक इंटेंशन होती है कि ऑडियंस जब उसको देखे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट फॉर्म पे ना देखे, एक एक टेक होम भी हो। सो आप दोनों से इंडिविजुअली ये क्वेश्चन है मेरा, अभय आप पहले बताना कि आपके लिए क्या यू थिंक शुड बी और विल बी the take home for us as audience? Ma'am, I think as you rightly has a ability to transcend beyond entertainment and touch people's lives and change the mindset of people in terms of how they think, how they behave. And that's a very good responsibility and very heavy responsibility, I should say, as actors we have, because Mm, whatever you do on screen, that might change some person. That is why films like Animal and Kabir Singh, so right, इनका एक impact रहा है positively भी negatively. So that responsibility I personally take it both handed, and I really would like to change and try to just inculcate things which are not there in the society, which I can do, and just मैं अपने काम से दे सकूं उस चीज को. I want people to just come out with feeling of angst, with a feeling of anger, with a feeling of questions. Safed is a film which won't give you the answers but will leave you with questions, and I want people to be with those questions, because that raises an urge to change something within us, not the society. right, Forget the society, because
while shooting for it, I mean, we felt that change. And since we are talking about, we all three of us are feeling the same energy कि हम कुछ हाँ change हुआ, तो वो एक प्योर इंटेंशन से जो चीज बनाई है मैम, आई थिंक वो जब जाएगी तो आई थिंक इट शुड रेज क्वेश्चंस विद इन, Right. इफ नॉट आउट देयर. तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों को ये फिल्म पसंद Very, आए. very well said, Abhay. Right. थैंक यू, बरखा, थैंक आप क्या ऐड करना चाहोगे? Um, I mean, just adding to what Abhay said, I think the one thing I want the audience to take away from this is acceptance. You know, the ability to accept and not just, I'm talking about acceptance as a generic term, not Hmm. acceptance towards transgenders or widows, you. like we're showing in the film. Just acceptance, you know, accept people for who they are, accept things for how they are. I think acceptance is something that I think causes a lot of stress in people's lives. It causes them to behave in ways which is not nice. Um, I think as if we just learn to accept, it takes away a lot of problems in the world. I think so. I think acceptance is something I want people to take away from this. Right. So you know, on that note, आप दोनों ने इतनी खूबसूरती से अपनी फिल्म की बातें रखी हैं that I really hope कि हम ये फिल्म देखने तो सफेद जाएं, लेकिन जब बाहर आए तो हम क्वेश्चंस और आंसर्स के रंग लेकर, एक्सेप्टेंस के रंग लेकर आए. और जैसे कि अभय ने कहा, वो जो एक क्वेश्चंस है ना that lead to answers, hopefully वो हम कर पाए. So wishing both of you all the luck for the success of not just this work, लेकिन आप फ्यूचर में जो भी काम करें. And thank you so much for your time for this interview right now. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू. थैंक यू. Bye. Thank you. Bye bye.